we are going to see some important point from drug regulatory affair part. This part is again very important for your exam. So you can expect around two or three questions from this part. This part is again very important for your GPAT and other exams. We are not going to take in a detail. I will just highlight few points which are important for your exam and the section from which they used to ask the question. First one is OECD guidelines. OECD guidelines. So they have already asked question on this. So you might expect the question from this. So OECD guidelines, they are nothing but the set of guidelines given by Organization, Economic Cooperation and Development. Organization, Economic Cooperation and Development, OECD. So these are the guidelines given by OECD, that is Organization, Economic Cooperation and Development, and they are accepted internationally. These are the guidelines for testing of chemicals and drugs on your animals and humans. Okay, so particularly animal. So these are the guidelines accepted by international community for testing of chemicals and drugs on animals particularly. First OECD guidelines was published in 1981. Remember, try to write down this, the full form of OECD. That is nothing but the Organization, Economic Cooperation and Development, OECD. So it is nothing but a regulatory board that gives guidelines for testing of drug and chemicals on animals. So first it was published in 1981. So then these OECD guidelines have five sections. These OECD guidelines have five sections. Okay. So first section one में क्या है? Section one is nothing but it describes the physico-chemical properties of drug. Section two will describe the effect of drug and chemicals on the biological system. Effect of drug and chemical on the biological system. Section 3 describe the degradation and accumulation of chemicals or drugs or their impurity. Impurity means degradation product. Then section 4 describes the effect of drugs and chemicals on health. Section 5, in this section 5 other guidelines are there. So these are the OECD guidelines. They are divided into five sections. Section first is the physical-chemical properties of drug and chemicals. Section 2, effect of drugs and chemicals on biological system or biotic system. Then section 3, degradation and accumulation of chemicals or drug or their degradation product. Then section 5 deals with the effect on health, chemicals and drugs, effect of drugs and chemical on the health. So particularly it is dealing with the animal studies. Section 5, other test guidelines. So these are the five sections for OECD guidelines. Remember what is OECD guidelines and it was first affected in, it was first published in 1981. Okay. Now OECD guidelines, there are different types of guidelines, OECD guidelines. So you can see first one is OECD guidelines. So here I have summarized the guidelines and their description. So particularly guideline number 4. Okay, guideline number 4 is for, so first digit indicate the section number. Say for example, first digit indicate the number. For example, 420 means 4 means acute toxicity studies. Whatever the number of guideline is there, so first number will indicate the section, main section. So for example, you can see over here. So guideline and description. OECD guidelines and description. Guidelines and description. First one is a 401. 401 is known as a acute oral toxicity study. So guideline 401 OECD according to OECD guideline 401 401 में क्या दिया है? Acute oral toxicity. Don't go in the detail what is meant by acute oral toxicity and all that. So it is nothing but just whatever drug under investigation is there. So to identify the toxic dose of that drug. So oral acute toxicity study is done. So I don't know whether you have any kind of research in your college or not. But when we was in a BPharm, we have done this. I was doing evaluation. That is nothing but the anti-convergent activity of Moringa oleifera. So at that time, the activity was to be tested on mice. Okay, Swiss albino mice. So for that purpose, I brought a mice from serum laboratory. That is nothing. The serum lab is nothing but those that is the industry which is who is making your vaccine. जो आपका वैक्सीन है कोरोना का वह भी बनता है. So I was there in the industry. I went there. I brought mice, Swiss albino mice, and
Then I have to perform first the acute toxicity study. So for that, a fixed dose 5 gram per kilogram dose was prepared. So the extract 5 milligram per kilogram dose of extract was prepared and given. Then you have to test number of animals and how many numbers of animals are they are died or not. So don't go in the detail what is the acute oral toxicity study. What do you mean by? So just remember the guidelines and their description. Okay. So first OECD guidelines 401 is for acute oral toxicity. So this was again asked in the GPAT. Charge 401 guidelines. According to OECD guidelines, 401 describes one of the following. ऐसा question था acute oral toxicity studies. Okay. Then 402 will describe acute dermal toxicity. Okay. Toxicity on the skin. Then okay, 403 will describe the acute inhalation toxicity. 404 will describe acute dermal reaction, that is irritation or corrosion. 405 will describe acute ocular reaction, irritation and again corrosion. So ocular study देखो यहाँ पे oral toxicity study 401, 402 क्या है dermal, 403 क्या है inhalation, ठीक है 404 404 क्या है आपका dermal acute dermal reaction, ओके 405 405 आपका लेकिन acute dermal मतलब ये irritation and corrosion locally corrosion कितना हो रहा है. Then 405 is nothing but the ocular acute ocular reactions, again irritation and corrosion. Okay, then next one is 406. So 406 according to OECD 406 study, that is skin sensitization and irritation caused by drug, that is study of study of drug on skin sensitization on or irritation. And 407 is nothing but the oral toxicity in rodent repeated dose study for 28 days. इसमें क्या होता है कि 28 डेज तक उसको एक फिक्स डोज दिया जाता है वो माइस और रेट्स में, और उसके बाद में टॉक्सिसिटी उसका मेजर करते हैं कितना डेथ हो गया कितना नहीं हुआ. देन विल सी नेक्स्ट that is number 408 guideline number 408. It is again oral toxicity in the rodent for 90 days. Previously 80 days था, अभी 90 days. OECD guideline number 420 420 OECD guideline number 420. It indicates the acute toxicity study, fixed dose procedure. Fixed dose procedure. This was question in GPAT 2019. Acute oral toxicity 401 का भी GPAT में क्वेश्चन आ चुका है. Acute toxicity study fixed dose combination, that is a 420 guideline. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है. The next one is 423. So acute toxicity toxic class method, that is in the 423 guideline. 425 acute toxicity up and down process. So this is important. Acute toxicity up and down process. 425 OECD guideline 425 gives acute toxicity study follows up and down process. So ये याद रखो आप, इसके ऊपर आ सकता है क्वेश्चन. So 401 acute toxicity, acute oral toxicity, यहाँ पे oral है, acute oral toxicity. Then 420 acute toxicity study fixed dose combination, fixed dose procedure. And OECD guideline 425 acute toxicity up and down process. ये तीन याद रखो आप, at least these three, 401, 420 and 425. Then 451, it is oncogenic or carcinogenic studies. So whatever the toxic effect of drug, okay, then it's oncogenic and carcinogenic study. So उसका cancerous effect है या नहीं है, carcinogenic है या नहीं है, उसका study. Next one is OECD guideline number 452, chronic toxicity studies. So that these are the toxicity studies according to OECD guidelines in the animals. So these 2-3 guidelines are very important. 401, 420, 420, 425. Okay. So remember this. So इसमें कौन सा स्टडी किसके लिए है, अप एंड डाउन क्या है, और फिक्स ओरल डोज प्रोसीजर क्या है, उसके बाद ओरल एक्टिव टॉक्सिसिटी स्टडी क्या है. तो ये याद रखो, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है. Now different regulatory agencies, different countries and their regulatory agencies. So हर एक, so every country has its own drug regulatory agency. Okay, so that enforces the regulation of drug throughout the country, right from import, manufacturing and sale. So that is again a very important part. So sometimes they used to ask the question on this, and even this part is also important for your interview purpose.
अगर आप कहाँ पे इंटरव्यू देने जाओगे तो वो भी पूछ लेगा आपको किसका कौन सा कंट्री का एजेंसी है. So USA, United States of America. So it will have US FDA. So USA has a US FDA, that is nothing but the US Food and Drug Administration. Then again UK have MHRA. UK has a MHRA. MHRA means Medical and Health Product Regulatory Agency. Then Australia have TGA, that is Therapeutic Good Administration. So these agency will regulate the drug, okay, in respective country. So in USFDA, if you want to sell your formulation in USA, then it must be USFDA approved. Okay, so अगर आपको आपका formulation USA में सेल करना है तो उसको USFDA का अप्रूवल लगेगा. Okay, so they will approve. They are not going to approve in an easy manner. So they will have a watch in each and every step during right from purchase of raw material and processing and all that, packing, processing and export. So until that they will have eye on each and every step of your product. तो सो यूएसएफडी में यूएस वाले क्या है कि यूएस वाले बोलते हैं कि नहीं, हम हमारे लोगों की सेफ्टी पहले एस्टेब्लिश होना चाहिए. सो दे आर मोर फोकसिंग ऑन द सेफ्टी ऑफ देयर पीपल. सो दे वांट द प्रोडक्ट बाय देयर नॉर्म्स विद द देयर नॉर्म्स. ये अपने नॉर्म्स नहीं चलेंगे, अपने गाइडलाइंस नहीं चलेंगे, उनके खुद के गाइडलाइन जो है यूएसएफडी के, तो उनके गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली ही आपका वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होना चाहिए, तभी जाके वो प्रोडक्ट आप यूएस में सेल कर सकते हो. सो यूएस फॉर यूएसए US FDA is there. For UK MHRA, Medical Health and Regulatory Agency. UK means London वगैरह जो है. Australia, for Australia TGA, Therapeutic Good Administration is there. And for India it is a CDSCO. For India it is a CDSCO. So what is CDSCO? Central Central Drug Standard Control Organization. Okay, Central Drug Standard Control Organization, CDSCO. For India it is a CDSCO. Remember, under the Directorate of General Health Services, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके अंडर ये CSCO आता है. सो इफ अगर आपको कोरोना वायरस की नहीं कोई वैक्सीन आई, उसको अप्रूव करना है, सो द द the company or the manufacturer has to take approval from CDSCO. There are other agencies also like Medical Council of India and all that. Then for European Union EMA, for European Union EMA, European Medicine Agency, or EDQM, EMA or EDQM. So EMA means European Medicine Agency and EDQM is European Directorate for Quality of Medicine. So these are the two agencies. For China, और चाइना के लिए कौन सा है, दैट इज NMPA, National Medical Product Administration. Okay, so formerly means the NMPA is the name given just before 2 years. Before 2 years it was known as CFDA, China Food and Drug Administration. ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में अगर पूछा which of the following is the regulatory agency for China, और अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा या फिर ऐसा भी पूछ सकते हैं which of the following organization will regulate a drug right from its import, manufacturing and all that in the China. So NMPA, National Medical Product Administration, NMPA. Now it is known as NMPA. Formerly it was known as the CFDA, China Food and Drug Administration. For Japan it is a PMDA. For Japan it is a PMDA, Pharmaceutical and Medical Devices Agency. And this was question particularly was for me when I was in a BPharm last year 2011. मैं एक R&D के लिए इंटरव्यू के लिए गया था. वहाँ पे मुझे क्वेश्चन पूछा PMD which is a regulatory agency for Japan. मुझे ये दो चार तो पता थे कौन से, USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, लेकिन ये जापान का मालूम नहीं था मुझे. So I was not able to tell them. So that was nothing but the PMDA, Pharmaceutical and Medical Devices Agency. That is for Japan. कुछ भी पूछ लेते हमको, और लेना नहीं है ना तो कुछ भी. Then next one is Canada. Canada के कौन सा है आपका regulatory agency? Canada has a TPD. Canada has a TPD, Therapeutic Product Directorate. Therapeutic Product Directorate, HPFC food branch. That is a food branch for Canada. तो आप इतना ही रहा तो वो for Canada it is a TPD, Therapeutic Product Directorate in Health. So that is a regulatory agency. For France it is nothing but the French Agency for Safety of Health Product. So ये फ्रेंच लैंग्वेज में ये जो फुल फॉर्म है AFSSAPS, इसका फुल फॉर्म फ्रेंच लैंग्वेज में है. एंड
दैट्स व्हाई आई हैव नॉट मेंशन। इसका कुछ फ्रेंच लैंग्वेज में इसका फुल फॉर्म है, लेकिन ये है फ्रेंच एजेंसी फॉर सेफ्टी हेल्थ। तो उनके लैंग्वेज में, फ्रेंच लैंग्वेज में उसका ये फुल फॉर्म है। Likewise that for Germany also, Germany has a Federal Institute for Drugs and Medical Devices, so BFARM। ये this is again a German language। ये German language का full form है BFARM। You can search if you want to read। Then for Brazil, the regulatory agency is ANVISA, ANVISA, National Health Surveillance Agency। Then then for Switzerland, it is nothing but the Swiss Agency for Drug and Medical Product. For Singapore, it is the HSA, Health Science Authority. So this agency you should know. Sometimes they can ask question on this. Now next one is, actually this is a content for our upcoming book known as a Fundamental Subject Matter Volume Second. There are certain regulatory terms which are very important to know. They can ask question on this. So first one is IND. What do you mean by IND? IND is nothing but the investigational new drug application. So whenever you want to test your drug in a, okay, you want to test your drug in a humans or human subject in US, then you have to file the IND, investigational new drug application। IND is nothing but the application to USFDA। USFDA जो वहाँ का रेगुलेटरी एजेंसी, उनको एक एप्लीकेशन करना पड़ता है आपको, IND एप्लीकेशन बोलते हैं उसको। So you have to file the IND। Then if they satisfy with your data and all that, they will give you approval for testing of your new drug, investigational new drug application, the application to FDA for legal testing of new drug on humans in US. It is IND. What is NDA? New drug application. NDA means new drug application. So new drug application, application again made to FDA to market a new drug or pharmaceutical to sell in US। इफ यू वांट, ठीक है, आपके ड्रग को सब कुछ है, थेरेपेटिक इफेक्ट है, आपका यूजफुलनेस है, ओके, यू हैव फॉर्मुलेशन, बट यू वांट टू सेल दैट फॉर्मुलेशन इन यूएस एफडीए, ओके, इन द यूएस, then you have to file new drug application। So for that they will ask you to submit data like preclinical data, clinical data and all that, so you have to submit in the prescribed format। That is the name of the new drug application, application to US FDA to market a new product or pharmaceutical to sell in the US. Preclinical data has been submitted along with the prescribed application. That is a ANDA. Okay, now we'll see the different terms again. What is ANDA and all that. Now next term is ANDA, abbreviated new drug application. So ANDA means what? ANDA means abbreviated new drug application। Your drug formulation is already approved in the uh, already approved, everything is available, clinical data, clinical data of clinical trials and all that, so it is available, but still with so suppose that you have patent of it, okay, now your patent is expired, so now another companies will jump in the market and they will try to formulate the same product whatever is your, so for that they have to apply for ANDA, abbreviated new drug application। So it is applicable for generic version of drug only. No need to submit clinical and preclinical data. Only bioavailability and bioequivalence studies data must be submitted to FDA। तो जैसे आपका, आपने पेटेंट लिया है, पेटेंट आपका एक्सपायर हो चुका है जैसे 20 years, सो आपने कमा लिया, छाप लिया कितना भी अमाउंट, ठीक है, वो पेटेंट की वजह से, लेकिन उसके बाद में क्या, आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ पेटेंट, so other companies they will be also interested in your product, so they will jump into the market, they will file ANDA application to FDA। until 20 year they cannot file, ठीक है, 20 साल तक आपको, जब तक आपका पेटेंट का टर्म है, so until your patent term is not expired, so no one can file ANDA। so once your patent application has expired, then only they are eligible for filing a new abbreviated new drug application form, and that is nothing but the generic version। यहाँ पे याद रखो आप, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। so abbreviated new drug application, that is for generic version of drug। so as the patent version was there, so patent also granted by evaluation of all data, जैसे clinical trials सब कुछ data होता है available, so because of that there is no need to submit the clinical and preclinical data again, okay, because that is already patented product, now it is going to enter into generic market, so that's why there is no need to submit any clinical and preclinical data over here, only bioavailability and bioequivalence studies data has to be submitted for ANDA application,
that is abbreviated new drug. After submission of this data, and if you apply for AND, so you will get a 180 days exclusivity. 180 days exclusivity. इसके ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चन आता है, how many number of days of exclusivity you will you will get after filing the ANDA, that is 180 days exclusivity. ये क्या होता है? So 180 days of market exclusivity to the first generic applicant who challenges a listed patent by filing a paragraph certification and thereby runs a risk of having to defend a patent. And तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने पेटेंट एक्सपायर होने से पहले ही अप्लाई कर दिया और वो जिसका पेटेंट है उसने अगर ऑब्जेक्शन ले लिया फिर उसने कुछ पेटेंट राइट्स जो होता है, सो पेटेंट इंफ्रिंजमेंट सूट, मतलब ही कैन फाइल ए पेटेंट इंफ्रिंजमेंट सूट, कोर्ट में आपके अगेंस्ट में कंप्लेंट कर सकता है कि नहीं ये मेरा पेटेंटेड प्रोडक्ट है, ये बना रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर वो लीगल एक्शन हो सकता है। सो उसके लिए 180 डेज एक्सक्लूसिविटी दी जाती है। मतलब अगर आपने एनडीए अप्लाई किया तो 180 डेज मतलब 3 मंथ्स 6 मंथ्स एक्सक्लूसिविटी दी जाती है आपको। सो इन दैट 6 मंथ if anybody has made objection on your ANDA, then your ANDA application is rejected. If nobody has objected your ANDA application, then your ANDA application is granted. Likewise that. So 180 days exclusivity, market exclusivity, मतलब ये 180 दिन तक आपको ऑब्जर्व करेंगे कि यार ये मतलब आपने जो दिया है एएनडी का उसके ऊपर कोई क्लेम करता है या नहीं। अगर कोई क्लेम करता है तो वो क्लेम इवेल्युएट किया जाएगा कि सच में इसका पेटेंटेड प्रोडक्ट है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपका एप्लीकेशन पास हो जाएगा, आपको उसका ग्रांट मिल जाएगा एएनडी का। अगर है तो फिर आपके ऊपर वो फिर वो गेम फिर उसके पल्ले में आ जाती है। तो क्या करना है वो देख लें, अगर आपके ऊपर केस करना है या नहीं करना है उसका। तो एएनडीए के लिए याद रखो कि 180 डेज एक्सक्लूसिविटी देते हैं, that is for generic drug. Now Orange Book, there was a question in GPAT 20 on this Orange Book. So what is Orange Book? Official title for approved drug with therapeutic equivalence evaluation. So this is a definition. So it is nothing but the official title approved drugs with therapeutic equivalence evaluation. So जो दो ड्रग है उनका therapeutic equivalence evaluation किया है, if two drugs are therapeutically equivalent and if they are enlisted in the book, so that is nothing but the Orange Book. So official book or official title approved drugs, okay, official title of approved drugs with therapeutic equivalence and evaluation known as a Orange Book. It has a orange color cover, so that's why it is also because of that it is also known as Orange Book. So इसका कलर भी ऑरेंज प्रिंट होता है उसका। जस्ट रिमेंबर ऑरेंज बुक इज नथिंग बट द ऑफिशियल title or book approved having approved drugs with therapeutic equivalence evaluation known as a Orange Book. Okay, so USFDA list of all approved as a safe and effective. USFDA drug list as all drug approved and safe and effective. It is authorized source of drug with therapeutic equivalent. So authorized source of drug with therapeutic equivalent. अगर आपके पास एक ड्रग है प्रोप्रानोल, वो यूज कर रहे हो लेकिन वो खत्म है, आपकी पूरे कंट्री में वो प्रोप्रानोल नहीं है, सो व्हाट इज द ऑप्शन? सो ऑप्शन इज बिसोप्रोलोल। सो बिसोप्रोलोल एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बिसोप्रोलोल एंड प्रोप्रानोल दे आर थेरेपेटिक इक्विवेलेंस। सो व्हिच इज थेरेपेटिक इक्विवेलेंस for which drug, that is given in the Orange Book. So therapeutic equivalence is given for a given particular drug, that is given in the Orange Book. Okay, so official title approved for the drug with therapeutic equivalence evaluation known as Orange Book due to its orange color of cover page. It is authorized source for drug with therapeutic equivalence of the drug product. Then new drug applications, then over the counter drugs, then abbreviated new drug applications, etc. थेरेपेटिक इक्विवेलेंट कोड्स आर गिवन फॉर द ड्रग्स। इसमें जितने भी ड्रग का लिस्ट होता है उसको एक थेरेपेटिक कोड दिया जाता है, थेरेपेटिक इक्विवेलेंट कोड। ओके, थेरेपेटिक इक्विवेलेंट, जो भी ड्रग को इक्विवेलेंट कोड है ए, इक्विवेलेंट कोड ए मींस सब्स्टिट्यूटेबल, मतलब अगर किसी ड्रग को थेरेपेटिक इक्विवेलेंट का कोड दिया है ए तो उसको आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, मतलब आपके पास वो अवेलेबल है तो दूसरा ले सकते हो जो भी सब्स्टिट्यूट है। एंड बी, जिसको भी थेरेपेटिक इक्विवेलेंस कोड बी दिया है, सो दे आर नॉट सब्स्टिट्यूटेबल। तो ये ऑरेंज बुक है, इसके ऊपर जीपैट 20 में क्वेश्चन आ चुका है। सो लाइकवाइज ऑरेंज बुक देयर आर अनदर बुक लाइक ग्रीन बुक। ग्रीन बुक इज आल्सो देयर।
So it is a list of authorized list of drugs authorized for which generic version is available. List of drug authorized for which generic version is available. कि जो ड्रग्स है अप्रूव ड्रग्स है तो उसका किसका जेनरिक वर्जन अवेलेबल है तो उसका लिस्ट किस में रहेगा ग्रीन बुक में. ऑरेंज बुक में क्या रहेगा टू ड्रग विथ थेरेपेटिक इक्विवेलेंस टू अप्रूव ड्रग आर of which safety efficacy has been established and they have therapeutic equivalence. They are enlisted in this orange book. Now in the green book, the list of drug authorized for generic version available. Generic version किसका available है उसका list रहेगा इसमें. Then blue book is there. So blue book is FDA requirement for law and regulation enforced by US FDA in discontinuation from. Okay, it is discontinued from October 2002. So a blue book भी था पहले. So that was nothing but having laws and regulation enforced by US FDA. तो blue book याद रखो आपको orange book क्या है green book क्या है blue book है. और next one is this point is very important. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है आपका. Okay, so Hatch-Waxman Act. Hatch-Waxman Act. So it is a synonym for Drug Price Competition and Patent Restoration Act 1984. So Hatch-Waxman Act is a synonym. It is a synonym for a Drug Price Competition and Patent Restoration Act 1984. तो जो पेटेंट रिस्टोरेशन एक्ट है ड्रग प्राइस कंपटीशन एंड पेटेंट रिस्टोरेशन एक्ट कोई हैच वैक्समन एक्ट ही बोलते हैं. So Hatch-Waxman Act is nothing but the Drug Price Competition and Patent Restoration Act 1984. Yes, it is nothing but the landmark for generic drug in the USA. जिससे पेटेंट एक्सपायर होता है वो जेनरिक में आ जाता है. Landmark for generic drug in the USA. So using this act, generic drug makers can file ANDA for approval of generic drugs. Means using this act ये act enacted क्यों किया कि once patent is expired so anybody can manufacture or anybody can formulate the drug. Using this act the drug manufacturer can able to file the ANDA, that is abbreviated new drug application, that is generic version of drug for approval of generic drug in a paragraph 4 okay, of the act, and 180 days market exclusivity will be given to the. उसके अंदर किसी ने कोई कंप्लेन उसके अंदर किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया वो अप्रूव हो जाएगा फर्स्ट फाइल अगेंस्ट द होल्डर्स ऑफ पेटेंट. ओके, सो पैराग्राफ 4 of the act allows 180 day exclusivity, market exclusivity to the companies that are first to file the ANDA against the holder of patent or against the patent holder. Okay, so Hatch-Waxman Act is amended. Hatch-Waxman Act is an amendment to the Federal Drug and Cosmetic Act, which established the modern system of approval of generics. So Hatch-Waxman Act is related with ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है. It is related with the generic version of drug. Hatch-Waxman Act is nothing but it is also known as it is nothing but the Drug Price Competition and Patent Restoration Act 1984. What is it? It is a landmark for generic drug in the USA. So once patent is expired, so that generic manufacturer will have to file ANDA application for FDA, and they will grant 180 days market exclusivity. 180 दिन के अंदर किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया कि ये मेरा पेटेंट है इसका टर्म फिनिश नहीं हुआ है अभी और नहीं आया तो उसको अप्रूव किया जाता है और बाद में वो जेनरिक प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाता है. दैट इज नथिंग बट द हैच-वैक्समन एक्ट. याद रखो थोड़ा सा ये एक इम्पोर्टेंट है. नाउ ICH गाइडलाइंस, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है. सो ICH मीन्स व्हाट? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन. International Conference on Harmonization. International Conference on Harmonization. Technical requirement for pharmaceuticals for human use. So, what is the technical? What are the technical requirement of drugs and chemicals? Is important for human use. So that is given in the ICH guidelines. That is the International Conference on Harmonization. It was first published in the April 1990. Again accepted by several countries. There are 4 types of guidelines. ICH guidelines. They are known as the quality guidelines, safety guidelines, efficacy guidelines and multidisciplinary guidelines. ये इसमें 4 टाइप की गाइडलाइंस होती है. क्वालिटी गाइडलाइंस, सेफ्टी गाइडलाइंस, इफिकेसी मतलब थेरेपेटिक गाइडलाइंस एंड मल्टी डिसिप्लिनरी गाइडलाइंस. सो यहाँ पे मैंने टेबल्स दिया है ना कि आपको क्वालिटी गाइडलाइंस कौन से. सो फर्स्ट वन इज क्वालिटी. क्वालिटी इज जनरेटेड बाय Q1 is for
स्टेबिलिटी टेस्टिंग, Q1 is for stability testing, ये याद रखो आपको, ये important है. Q2 is for analytical method validation, Q3 is for impurities in the preparation, Q4 is for pharmacopoeias, Q5 is for biotechnological product, Q6 is for acceptance criteria for the test. जैसे होता है ना आपका, जैसे डिसोल्यूशन टेस्ट है, आपका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होता है, D+5%. द फर्स्ट स्टेज. सेकंड स्टेज में D प्लस सॉरी D-15%. थर्ड स्टेज में आता है आपका D-25%. याद करो आप, ओके, जो क्राइटेरिया होता है वो. तो Q1 is nothing but the stability testing, Q2 is analytical method validation, Q3 impurities, Q4 pharmacopoeias, Q5 biotechnological product, Q6 acceptance criteria for the particular test, evaluation test. Okay, that is remember the ICH guidelines. Next one is, we'll see. Next one, the Q7. Q7 is for manufacturing practices, GMP. ये भी हो सकते हैं. So GMP is given in the one of the following ICH guideline, that is nothing but the Q7 or quality guidelines. Q8, that is a pharmaceutical development. Q9 quality risk management. इसके बारे में क्वेश्चन आया था एक बार, quality risk management. So ICH guideline for quality Q9 gives you the quality risk management. Okay, so that give the information regarding the quality risk management. Q10 is a pharmaceutical quality system. Q11 development and management of new drug substance. Q12 is a life cycle, not life cycle, आपका life cycle है, product life cycle. Q13 is a continuous manufacturing. Q14 is a analytical process development. These are the quality guidelines. ये quality check करने के लिए होता है, ये quality check करने के लिए होती है. So these are the quality guidelines. Now what are the safety guidelines? Safety guidelines. CH guidelines for safety. Yes, one guideline is known as a carcinogenic studies. One guideline, that is safety. Yes feels yes for safety. हर एक प्रोडक्ट का सेफ्टी कितना है, ठीक है, उसके लिए गाइडलाइंस होते हैं. That should not be carcinogenic. So S1 is for carcinogenicity study. S2 is for genotoxicity study. S3 is for toxicokinetics and pharmacokinetics. S4 is for organ toxicity studies. S5 is for reproductive toxicity. And S6 is for biotechnological product. कभी इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है तो इसलिए. S7 is a pharmacological studies. S7 is nothing but the pharmacological studies. S8 nothing but the immunotoxicological studies. S9 non-clinical evaluation of anti-cancers. S10 photosafety evaluation. And, S11 non-clinical pediatric safety. So safety guidelines are not they has not been asked. सेफ्टी गाइडलाइन जो है इसके ऊपर नहीं आया कभी क्वेश्चन, लेकिन क्वालिटी गाइडलाइन जो है उसके ऊपर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है. देन एफिकेसी गाइडलाइंस आर आल्सो देयर. थेरेप्यूटिक गाइडलाइंस, उसके बहुत सारे गाइडलाइंस होते हैं. There are 18 guidelines which are not much important for UGPAT. That's why I have not listed over it. बोलेंगे सर आपको कैसे पता क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं, अभी इसका आंसर मेरे पास भी नहीं है. नेक्स्ट वन इज ISO स्टैंडर्ड्स. कभी कभी इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है. ISO स्टैंडर्ड्स, so different ISO standards. So ISO means what? Nothing but the international standard for organization. यहाँ पे लॉन्ग फॉर्म में याद रखो, ISO means international standard for organization. Obviously international standards for organization मतलब ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड को ऑथराइज करती है कि आपका प्रोडक्ट स्टैंडर्ड है या नहीं है. इसका ऑथराइजेशन कौन करेगा? ISO, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर ऑर्गेनाइजेशन. So it was started in the February 1947. A independent non-government organization which is all over 163 countries, which is all over 163 countries, published in which has published already 19,500 international standards. एवरी इंडस्ट्री, हर एक इंडस्ट्री में होता है. जैसे स्टील होता है, ISO का मार्क है कि नहीं, आप देख के लेते हो ना. आपने कोई प्रोडक्ट लिया इलेक्ट्रॉनिक, उसके ऊपर ISO मार्क है कि नहीं, ये देख के ही लेते हो. नहीं यार, उसके ऊपर ISO मार्क है मतलब ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड है. The standard of that product has been established or had been approved by ISO, and that's why that product is, you can trust that product. So headquarters of ISO, where is the headquarter of ISO? इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. आई थिंक हेडक्वार्टर ऑफ ISO इज हियर, सेंट्रल सेक्रेटेरियन इन जिनेवा. जिनेवा जो है, जिनेवा कन्वेंशन वगैरह जो होता है, जिनेवा, वहाँ पे इसका हेड ऑफिस है. स्विट्जरलैंड में भी है. देन BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड रिप्रेजेंट ISO इंडिया. ISO इंडिया का है BIS, ISO इंडिया का है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड. ISO इंडिया में
BIS नाम से जाना जाता है। इसके डिफरेंट डिफरेंट ये होता है। सो ISO 9000 gives quality management, ISO 50001 gives energy management, guidelines for energy management. So these are the guidelines. ISO 9000 gives guidelines for quality management, ISO 31000 gives guidelines for risk management, ISO 22000 guidelines for safety management, and 3166 gives country codes, different country code. IEC 7001 information security management, ISO sustainable event, ISO 1400, ISO 14000 environmental management. इसके ऊपर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है. So at least you should know ISO 9000, then ISO this 14000 के नीचे वाले ISO 9000 फैमिली. नीचे क्वालिटी मैनेजमेंट जो है उसके अंदर भी बहुत सारी ISO 9000 फैमिली. So ISO 9000, 2000, 9001, 2008. It is nothing but the set of requirement for the quality management system. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. ISO 9001, 2008. So that gives the set of requirement, is the set of requirement for quality management system. And ISO 9000, 2005. ISO 9000, 2005. It gives the guidelines of basic concept and language. यहाँ पे कुछ basic concept and language के बारे में बोला है. It is not much more, but you should know ISO 9001, 2008 that gives the set of requirement for QMS, quality management system. ISO 9004, 2009 give focus on the how the quality management system can be more efficient and effective. That focus on the how QMS can be most efficient. And ISO 19011, 2011 standard for internal and external for QMS. जो audits के बारे में, so standards for internal and external audits, that is given in under the ISO 19011, 2011. ISO का फैमिली है ये, मतलब आपने देखा होगा ISO 9000 अप्रूव्ड ISO का सर्टिफिकेट है, मतलब क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है वो. कुछ ना ये डॉक्यूमेंटेशन होता है, बाकी कुछ नहीं. डॉक्यूमेंटेशन करेक्ट हो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा. बाकी आपका कॉलेज कैसा है या फिर आपकी इंडस्ट्री कैसी है लेना नहीं. आप बाहर से देखेंगे तो लगता भी नहीं कि इंडस्ट्री है तो उसको ISO सर्टिफिकेट मिला है. ISO सर्टिफिकेट आपके डॉक्यूमेंटेशन के लिए मिलता है कि डॉक्यूमेंटेशन करेक्ट है आपका सब कुछ, तो ISO सर्टिफाई कर देगा आपको. वो नहीं देखेगा इंडस्ट्री है या नॉर्म्स है कि नहीं. कुछ कॉलेजेस जहाँ पे AICTE के नॉर्म्स के तहत वहाँ पे लिफ्ट होना चाहिए कॉलेज में. AICTE के नॉर्म्स के तहत वहाँ पे उसका रैंप होना चाहिए कॉलेज में. वहाँ पे AICTE के नॉर्म्स बहुत ही मतलब अलग होते हैं कि वहाँ पे एक सेपरेट वॉशरूम होना चाहिए हैंडीकैप के लिए. एवरीथिंग ऐसा ऐसे नॉर्म्स होते हैं, लेकिन हर एक कॉलेज में होता है कि नहीं. फिर भी AICTE अप्रूव है ना. ऐसा होता है कि ISO अप्रूव मतलब इट इज नथिंग बट द डॉक्यूमेंटेशन करेक्ट आपका तो ISO आपको ISO दे देगा. डजंट मीन योर कॉलेज इज परफेक्ट और योर इंडस्ट्री इज परफेक्ट. मार्केटिंग के लिए होता है कि हमारा ISO सर्टिफाइड है. ISO सर्टिफाइड मतलब क्या है, बहुत बड़ा तीर थोड़ी है. क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम QM is a total quality management system. It is a management system or a philosophy, constant organizational improvement in order to excellence interior customer service and loyalty. Total quality total quality management क्या है? It is nothing but the management system and philosophy that for constant organizational improvement. कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कांस्टेंट इंप्रूवमेंट करने के लिए एक मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप किया जाता है, उसको टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं. तो कभी कभी इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंट. मेरे हर एक डॉक्यूमेंट में कुछ नया मिलेगा आपको, ये प्रीवियस डॉक्यूमेंट में ये नहीं था. सो फिलोसॉफीज ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. फिलोसॉफीज ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. ओके, एक्सपर्ट विल विन और हाउ टू अचीव द क्वालिटी. हाउ टू अचीव द क्वालिटी इवन यूजिंग QMS क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम. तो उसके लिए एक्सपर्ट्स ने व्यूज दिए. सो एक्सपर्ट व्यूज ऑन हाउ टू अचीव द क्वालिटी ओके ऑफ योर प्रोडक्ट. सो these are the different experts, they have given philosophy means their views. Okay, so Walter A. Shewhart, so he gives the philosophy like understanding the variability concept and statistical control charts. अभी इसके मीनिंग क्या है ये बात में मत पढ़ो. ये याद रखो कि वाल्टर ए श्वेहार्ट ने ये बोला था अंडरस्टैंडिंग द वेरिएबिलिटी कंसेप्ट और स्टैटिस्टिकल कंट्रोल चार्ट.
helps you to build the quality management system. इसका ये कहना है. W. Edwards कहना है कि management responsibility for 14 points quality improvement. Management responsibility for quality 14 points quality improvement. इसका ये philosophy. Joseph M. Juran. Joseph M. Juran. Of quality cost, technology, quality planning, quality control, quality improvement. जोसेफ एम जुरान इस और उसका इसका एक बुक भी है, क्वालिटी एश्योरेंस का बुक आता है जुरान का. So that is nothing but the written by him, Joseph M. Juran. So his philosophy regarding the quality management system is nothing but the concept of quality, cost, quality, triage. Okay, so here sometimes they used to ask the concept quality, cost, quality, and triology is the philosophy given by one of the following. ऐसा बोलेंगे जोसेफ एंड जुरान. ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर, इसलिए वो इंक्लूड किया. आर्मंड ई बर्न, ई फिगेनबर्न. सो टोटल क्वालिटी कंट्रोल. इसका फिलिप बी क्रॉस बाय concept of zero defect at right first time. Zero defect to the right the first time. That is a philosophy for B cross by. कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स आपको अंडरस्टैंड करने वाला फिर कोई कंसेप्ट हो ऐसा कुछ नहीं है. कंसेप्ट ऑफ इंटरनल कस्टमर एंड क्वालिटी साइकिल. कुछ जापानीज है, तागुची तागुची. कंसेप्चुअल प्रोडक्ट डिजाइन, क्वालिटी डेवलपमेंट, तागुची लॉस फंक्शन by Taguchi. These are the some ये आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कुछ देख लो. ठीक है, सो ये एक्सपर्ट है, उनकी ये फिलोसॉफी है रिगार्डिंग क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम. सो कभी कभी इसके ऊपर क्वेश्चन एक बार आ चुका है जीपी में, आई थिंक 20 में आया था या 21 में. तो एक कॉलम में दिया था ये साइंटिस्ट के नाम, दूसरे कॉलेज में कॉलम में दिया था उनका फिलोसॉफी. ये जो आपने आपका जो जो नया पीसीआई सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो सिलेबस डाला है आपको, उसके उसके ऊपर एक क्वेश्चन था. नेक्स्ट वन इज डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेबिलिटी स्टडीज फॉर द फार्मास्यूटिकल्स. इसके लिए इंपॉर्टेंट है ये चार्ट आगे जीपैट के लिए आपकी. देयर आर थ्री टाइप ऑफ स्टडीज, देयर आर थ्री टाइप ऑफ स्टेबिलिटी स्टडीज ऑफ योर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट. सो फर्स्ट वन इज लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी स्टडी. सो long term stability study, it is conducted for 5 years, up to 5 years. Okay, so at the temperature 25 plus minus 2 degrees Celsius, relative humidity 60 plus minus 5%. आपका प्रोडक्ट पे जो प्रोडक्ट है आपका 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करने का वहाँ पे रख देने का, जहाँ पे ह्यूमिडिटी आपका ये मेंटेन करने का 60 प्लस प्लस माइनस 5, 60 रिलेटिव ह्यूमिडिटी. तो 5 इयर्स के लिए 5 साल के बाद में वो प्रोडक्ट ले फिर से विड्रॉ करने का चेंबर में से स्टेबिलिटी चेंबर. वेरियस काइंड ऑफ स्टेबिलिटी चेंबर्स आर देयर इन द इंडस्ट्री. बड़ा सा एक जितना रूम होता है एक बड़ा वाला, उतने उतने बड़े बड़े स्टेबिलिटी चेंबर्स होते हैं इंडस्ट्री में. तो जो प्रोडक्ट आपने बनाया है उसका स्टेबिलिटी चेक करने के लिए स्टेबिलिटी चेंबर में उसको रख देते. स्टेबिलिटी कितने टाइप का होता है? एक तो 3 टाइप का होता है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, इंटरमीडिएट टर्म स्टेबिलिटी एंड एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी. Three kind of study which is done for the testing of stability of the product. So long term stability studies, they are tested for 5 years at a temperature 25 degrees Celsius and 60% relative humidity. Then for intermediate stability testing, so your product is tested for 6 months at 30 degrees Celsius and 65% relative humidity. For accelerated stability study, again it is tested for 6 months at a temperature 40 degrees Celsius and 75% relative humidity. याद रखो यहाँ पे लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी कितने के लिए होता है? 5 साल के लिए. टेम्परेचर कितना है? 25, ह्यूमिडिटी कितना है? 60. मेजर स्टेबिलिटी के 6 मंथ के लिए टेस्ट किया जाता है. टेम्परेचर 30, रिलेटिव ह्यूमिडिटी अपना 65%. ठीक है. एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडीज 6 मंथ. एक्सेलरेशन क्यों करना है? टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्या होगा? डिग्रेडेशन उसका इंक्रीज हो जाएगा. जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है इंक्रीज किया, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज किया आपने. सो दैट इज नथिंग बट द यू आर एक्सेलरेटिंग, यू आर enhancing the degradation of your product. So that's why accelerated stability study that is done for 6 months at a temperature 40 degrees Celsius and 75% relative humidity. Chart is again very important here, just I have added climatic zones. For stability testing,
हर एक क्लाइमेट जोन, मतलब यूके में क्या है, यूके में ठंड रहती है ज़्यादा, वहाँ का क्लाइमेट अलग है, इंडिया का क्लाइमेट अलग है, दुबई का क्लाइमेट अलग है ना। So because of difference in the climate of different countries, so for stability testing they have divided the world into different zones. Okay? हर एक कंट्री कौन से जोन में आता है उसके लिए स्टेबिलिटी के लिए अकॉर्डिंग टू दैट स्टेबिलिटी कंडीशन विल बी सेट. Okay, so they have divided the countries in different stability zones. So first one is zone first. One is zone first known as a temperate zone. One is a zone first known as a temperate zone. Here you will find a condition like 21 average degree Celsius temperature, 45% humidity. Okay? So UK, USA, Northern Europe, Russia. तो ये जो कंट्रीज है यूके, यूएसए, नॉर्दर्न यूरोप एंड रशिया, ये कंट्रीज में मोस्टली टेम्परेचर इतना होता है 21 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी होता है 45%. तो वो आता है टेम्परेट. टेम्परेट उसका नाम है टेम्परेट जोन, और उसको जोन बोला है जोन 1. जोन सेकंड में आता है आपका, जोन सेकंड इज नोन एज सब ट्रॉपिकल और मेडिटेरियन जोन. सब ट्रॉपिकल और मेडिटेरियन जोन. सो जोन सेकंड में, सो यू विल हैव 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ओवर हियर and 60% relative humidity. So mostly Japan and southern Europe that comes under the zone second. Now zone third is known as a dry and hot and dry. Zone 3 is nothing but the hot and dry. So यहाँ पे temperature, so 30 degree Celsius, 35% relative humidity. So the countries like Iran, Pakistan, Iraq, okay, Pakistan, Iran, then Nepal, etc. So kind of countries that comes under zone 3. Zone 4 is known as a humid or tropical, or hot, humid or tropical. So tropical zone कौन सा है, hot, humid or tropical, that is zone number 4A. Zone number 4A, here you will have a 30 degrees Celsius average temperature, 65% relative humidity, and countries like Egypt, Iran, that comes under the zone 4A. Now next one is zone 4B. It is known as a hot and very humid. 4B is known as hot and very humid. So here you will find temperature of 30 degrees Celsius, 70% relative humidity. So Brazil and Singapore, these are the two countries that comes under zone 4B. So you have to remember these zones, their synonyms and country. Sometimes they used to ask question. So India comes under one of the following zones of stability, zones for stability testing. तो आपको ये नाम देंगे, जोन 1 2 4 ऐसा ऑप्शन देंगे, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, या फिर आपको डायरेक्टली ऐसा देंगे टेम्परेट जोन, सब ट्रॉपिकल जोन, मेडिटेरियन जोन, हॉट ड्राई. ये सो इंडिया कम्स अंडर हॉट एंड ड्राई. ओके, सो यू शुड एबल टू रिकॉल इट. यहाँ पे या तो, एंड डिपेंडिंग ऑन दिस जोन्स स्टेबिलिटी कंडीशंस आर एस्टेब्लिश्ड फॉर द टेस्टिंग ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ योर प्रोडक्ट. नेक्स्ट वन इज नोन एज ICH गाइडलाइंस ऑन स्टेबिलिटी टेस्टिंग. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, ICH गाइडलाइंस फॉर स्टेबिलिटी टेस्टिंग. सो हियर आई हैव माय टेबल टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन. तो ICH गाइडलाइन Q1A, ICH गाइडलाइन Q1A bracket R2, that is nothing but that you will describe the stability testing for new drug substance and product. ये चार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. Okay, so ICH guidelines for stability testing Q1A R2, stability testing of new drug substance and product. Then Q1B, stability testing of it is known as a photo stability studies of new drug substance and product. यहाँ पे देखो Q1 तो ठीक है, Q1 कॉमन है सब में. A में क्या है, stability testing of new drug and new drug substance and product. Q1 1B में क्या है, Q1 कॉमन है, ठीक है. Q1B में फोटो स्टेबिलिटी, मतलब यहाँ पे क्या, लाइट का इफेक्ट, मतलब इफेक्ट ऑफ लाइट, इफेक्ट ऑफ सनलाइट और अदर लाइट ऑन योर, ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ योर प्रोडक्ट. जैसे लाइट ज्यादा गिरेगा, फोटो स्टेबिलिटी. ओके, सो फोटो स्टेबिलिटी ऑफ न्यू ड्रग एंड सब्सटेंस एंड प्रोडक्ट, दैट इज Q1B. Q1C is nothing but the stability stability testing for new dosage form. सो ड्रग यहाँ पे क्या है, डोसेज फॉर्म है. Q1C स्टेबिलिटी टेस्टिंग फॉर न्यू डोसेज फॉर्म. 1D, 1D is known as bracketing and matrixing designing. Bracketing and matrixing designing, GPAT 21 में क्वेश्चन आया था. So Q1D guideline of ICH, Q1D, Q1 sub guideline Q1D
of ICH guidelines on stability testing will describe bracketing and matrixing डिजाइनिंग फॉर स्टेबिलिटी टेस्टिंग। एक थोड़ा सा मतलब यहाँ पे जो आपका एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होता है कैसे होना चाहिए, सो ब्रैकेटिंग एंड मैट्रिक्सिंग उस टाइप का है कुछ। ओके, सो आपको यहाँ पे डिटेल में नहीं जाना है, आपको सिर्फ याद रखना कि Q1D is for bracketing and matrixing design। So GPAT 21 में ये क्वेश्चन आया था। Then Q1E is nothing but the E for evaluation of data। Evaluation of what? Q1E is nothing but the evaluation of stability data, and Q1F is nothing but the stability data for zone 3 and zone 4। So this chart is again very important. You have to take a write down this chart or take a screenshot or not. So this was today's lecture. We have seen these points। में आपका 2 या 3 क्वेश्चन आपको 100%, ये जो 4 5 पन्ने का मैंने बोला है आपको, इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आपको 100% आएगा एक लास्ट एंड में। ओके, सो उसके लिए एक ऐसा एक लेक्चर लूंगा मैं आपका क्वालिटी एश्योरेंस का। सो they might ask you 1 or 2 question from quality assurance, so I will pick up the notes from that quality assurance, important notes, and I will present। Notes are very important। यहाँ पे आप लिखना, really you should write these things or you should make a screenshot of these। Okay, so ISO standards are particularly important, and quality these guidelines, quality guidelines, safety guidelines are not much important, quality guidelines are very important, and efficacy guidelines are also not much important। Then ISO standards are there, these philosophies of total quality management system is important। Then this zones, stability zones, different stability zones, they are important। then ICH guidelines on stability testing, उसके सब टाइप क्या है, वन जो है that is a stability guideline, but उसके सब टाइप क्या है, Q1A B C D E F, these are very important। so Q1D is for bracketing and matrixing designing of stability। तो ये भी important है, जैसे हैच-वैक्समैन एक्ट, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है जीपैट में। ओके, उसके बाद ऑरेंज बुक के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। एनडीए क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए, डिफरेंट कंट्रीज एंड देयर रेगुलेटरी एजेंसीज, वो भी मालूम होना चाहिए आपको। ठीक है, दी गाइडलाइंस क्या होता है उसके ऊपर भी एक बार क्वेश्चन आया था जीपैट में। दीज आर द पॉइंट्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर रेगुलेटरी पार्ट। सो इफ एनीबॉडी इज डाउट दे कैन आस्क। सो अगेन इसके जैसे ही मैं कुछ और भी लेक्चर ले लूंगा, अगर पॉसिबल होता है तो ले लूंगा।